Coding also. चलो लेट अस बिगिन. ठीक है, एक एक करके सॉल्व करें सारे. ऑल ऑफ यू फोकस ओवर हियर. फोकस करेंगे. ठीक है, पहले आई विल सॉल्व. इफ इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें, यू विल आस्क मी. ठीक है, ऑडियो ऑन करके पूछ लेने का फटाफट से कि ये वाला सर आपने कैसे सॉल्व किया, मुझे नहीं समझ में आया. ओके चलो लेट अस बिगिन. लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट वाला कौन सा था? टेल मी. फर्स्ट फर्स्ट वाला कौन सा रिएक्टेंट था? Sec butyl bromide. Butyl bromide. Okay, very good. Sec butyl bromide. How I should draw sec butyl bromide? आयुष हेल्प कर मुझे. sec butyl bromide कैसे ड्रॉ करेंगे आयुष? आया? Sir, CH3, 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 then CH2. CH2. सर मैंने स्ट्रेट बनाया है, चलेगा? हाँ ठीक है, बोलते जा चलेगा चलेगा. फिर CH, then CH. CH3, downward Very CH3 good. and CH3, CH को अपर वाले थर्ड वाला CH को BR से कनेक्ट करना. एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, शाबाश. देन क्या करूं मैं? बता आयुष. प्लस Mg, प्लस Mg. देन क्या करूं उसके आगे बता. we used to use the dry, sir. ड्राई ईथर. क्या बात है आयुष, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. अब क्या कर दें बता. Sir, ले we जाके तुझे need बिठा to देना है. एमजी को दो जन के बीच में बिठा देना है. वो कौन से दो जन है जिनके बीच में एमजी जाके बैठ जाएगा? butyl and bromide. ओके. CH3, CH2. Students, switch on your camera. Switch on your camera. You want me to tag your name in the WhatsApp group right now? Then Mg and then Br. MG and BR ऐसे लिख दूं चलेगा? है ना? CH sir. और BR के बीच में आ गया. Students, always remember what you have to do is you have to put Mg in between CH and BR. CH and BR के बीच में डाल देना है. ठीक है, और कुछ भी नहीं करना. Nothing else. Nothing else. Is that clear? चलो, should I move ahead? आगे चले जाएं students. What I'll do is I'll continue with this step. Okay, I'll not rewrite the same thing नीचे, तो so that अपना थोड़ा सा टाइम बच जाए. आप क्या करोगे? आप ये सेम चीज नीचे लिखोगे, राइट? ये पूरा चीज वापस से यहाँ पे लिखोगे एंड देन प्लस वाटर करोगे. मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग इट, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली. बट बिफोर दैट लेट मी राइट दी कॉमन नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट जो मुझे बना है यहाँ पे. क्या है कॉमन नेम? बता आयुष, बताएगा इसका कॉमन नेम क्या है? दिस इज व्हिच Sir, sec butyl bromide. sec butyl. sec butyl Bromide. नहीं नहीं नहीं, बीच में कौन आ कौन से गया? का? प्रोडक्ट का. हाँ हाँ, प्रोडक्ट का. तो सर मैग्नीशियम ब्रोमाइड. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. मैग्नीशियम ब्रोमाइड बहुत अच्छे से दिया एंड बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन. आई एम श्योर सबको समझ में आया है ना स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर नाउ? सृष्टि, शोनी, प्लीज टेल मी. रुजुता, टेल मी. एनी डाउट्स अप टिल नाउ? एनी डाउट्स अप टिल नाउ? वेरी गुड. अक्षय, एनी डाउट? महक, एनी डाउट? देव शाह, साहिल, आदिपुरव? Sir, यस यस शोनी बोल. sir, while they are straight away, so then we have to connect to CH only, na? Mg and Br. Yes, every time. See, this is how you have to remember, Shonit. The bond between carbon and halogen, that bond has to be broken into two parts, and in between that bond, you have to place your Mg. Understood? Sir. हाँ, बोल. So I will write if I did write in butyl in a straight line. Yes, sir, that only. Okay. No problem. I'll show this also. ये देख ऐसे लिख देंगे आयुष. ये देख देंगे. चल दिखाता हूँ. ठीक है. So CH3, CH2, CH, CH3, next Br. समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो. हाँ, नो प्रॉब्लम. आर्यन, नो प्रॉब्लम. आई विल रिपीट अगेन, नो प्रॉब्लम.
So क्या किया अपन ने आर्यन? This is sec butyl bromide. ठीक है, this is butyl bromide. And first step हमने कर लिया आर्यन. We have done this first step. In the first step, what I've done is I've just incorporated the magnesium metal between carbon and halogen. That's it. Understood, Aryan? Clear? Okay, that's it. Now I'll move on with the second step, students. I'm sure आपने इसको वापस से नीचे ले लिया होगा प्रोडक्ट को, एंड आगे आप रिएक्शन करोगे, but I'll continue with the same step. वहीं से I'll continue. So H and OH, correct? H and OH we will take, right, students? What we will now I'll use pencil. I'll use pencil, and pencil use करके ये part and this part over here. I have to connect these two parts, right, students? Oh my God, याद आ रहा है? याद आ रहा है? Yes. अपन क्या करेंगे? Again, I'll write dry ether over here. I'll write dry ether over here. I'll delete this name so that I get some space over here, students. So this is how I'll write. This is how I'll go ahead. Okay. Mg, then I should write ER, then I should write OH. Correct? OH. है ना? Yes, sir. Now the rest everything would be same. So this part, students, the main part. Now let us come to the main in straight line because I don't have space. So अभी same thing मैं straight line में लिख रहा हूँ. ये देखो, ये clear हो गया? Okay. And instead of M, I'll write in green color H. ये check करो. Is this understood? Is this understood, students? Is Yes, this sir. understood? सर शाबाश. Yes, yes. बोल जो आयुष. H है वो भी हम लोग को CH से ही कनेक्ट करना रहेगा ना? Absolutely perfect. तू ऐसे पूछने का आयुष, ऐसे पूछने का. ये देख, if ये वाला पूरा बॉक्स निकाल दिया तो किसका लॉस हुआ आयुष? CH का लॉस हुआ ना? CH का. हाँ, तो अगर ये बॉक्स निकालेगा तो ये देख आयुष, ये देख किसका पास बॉन्ड इनकम्प्लीट बॉन्ड है, किसके CH पास के पास. हाँ. So whatever you bring in place of this MgBr, that has to come to CH only. Okay? Yes, sir. So initially ऐसे ही लिखेगा. Even though आयुष को समझ में आ गया है, even though Srushti has understood, even though Swati has understood कि I can write in this pattern also, students. ये देखो, I'm sure सृष्टि को समझ गया है और स्वाति को समझ गया है. I'm sure आदि पूर्व को भी समझ गया है, अक्षय को भी समझ गया है. सब बोलेंगे सर ये ऐसे क्यों लिख रहे हो? Simply also CH2. Am I wrong over here, students? Am I No, wrong sir. over here? No. No, sir. Even but just to understand the reaction, what is happening in the reaction, that is why I'm writing this pattern, students. वो ऊपर H में लिखता हूँ मैं ताकि मुझे समझ में आए. अगर 3 दिन बाद if I open this textbook notebook तो मुझे समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है. Clear? So वो wrong नहीं है. After 2 months maybe Srushti Panchal will write it in this pattern. Srushti बोलेगी सर मुझे समझ में आ गया. Now I'll write it like this. After 3 months, स्वाति बोलेगी सर ये पूरा कचरा क्यों लिखना है, मुझे तो समझ में आ गया ना. Now I'll write like this. Is she wrong, students? Is she wrong? No, No, sir. No. sir. Correct. But students, स्वाति initially आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, for the next 1 month, स्वाति will write in this pattern only, so that अगर स्वाति को उसके किसी फ्रेंड ने पूछा स्वाति ये रिएक्शन कैसे होता है, एक्सप्लेन हिम और हर कि देख जहां पे MgBr था ना उसको निकाल के वहीं पे यू हैव टू पेस्ट H of वो. करेक्ट स्वाति? करेक्ट स्वाति? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस. चलो टेक अ स्क्रीनशॉट. टेक अ स्क्रीनशॉट. IUPAC नेम ब्यूटेन, कॉमन नेम N-ब्यूटेन. ओके. सेकेंड रिएक्टेंट पे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स में. I'll go to second reactant now. I'll go to second reactant now. चलो, tell me the name of second reactant. What was the name of second reactant? 2-chloropropane. Propane. 2-chloropropane. ये रहा. Okay, Srushti Panchal will help us now.
Yes, Sir, sir. चलो go ahead. हाँ, anybody has doubt? we क्या can आवाज write सुनाई in दी? CHV also, no? Sorry, Shonit, tell me. We can Please write repeat in your. CHV also, no? Straight. Yes. See, only thing why I'm writing it in the vertical form is because I don't have that much space. Okay. Okay, Shonit. So yeah, this is how I have written it. If you want to write it in straight chain, you have to write it in this pattern, Shonit. This is how you will write. Either you can put CL above or you can put CL below the CH. Understood? Okay, very good. You should not do, Shonit, is the only thing which you cannot do is this. Do not try to write it in condensed form. I know propyl C3H7. This will be wrong. Yes, sir. Okay, why this is wrong, students? अच्छा, अगर अभी suppose आयुष मुझे बोलता है सर ये wrong क्यों है? If I count this, total will be this only. C3H7 counting करो students. Counting total is correct. आयुष पूछेगा सर ये तो करेक्ट है ना, क्यों आप बोल रहे हो करेक्ट नहीं है? Because students, because can I make out from this formula, can I make out to which carbon Cl is attached? To which carbon number No. Cl is attached? No. No. So that is why every time condensed formula will not. Suppose students, अगर मैंने सृष्टि को बोला कि सृष्टि you have to draw one chloropropane. So now this will do. Now I have no problem with this. Okay? Because whenever Srushti will write this condensed formula, I will take it for granted that Cl is on first carbon. I will take it for granted that Cl is on first carbon. Is that understood, students? Is that understood? Yes, Should sir. I go ahead? चलो आगे Yes, चले yes. जाएं. I hope this is clear. फिर भी कभी आपको टेंशन आया इसका तो मुझे वापस पूछ लेना. ठीक है? You can ask me again whenever you are confused. And whenever students, whenever there is confusion while solving these reactions at home, जब भी आपको confusion आए, immediately post your doubt on the group. Do not wait for the lectures. Okay, am I clear on this? Shonit, clear हूँ मैं? If Shonit Yes, is sir. writing his homework लिखते वक्त Shonit को कुछ doubt, ये तो wrong है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये वाला wrong है. क्लास में भी सर ने wrong पढ़ाया. अगर ऐसे Shonit को लग रहा है क्लास में सर ने wrong पढ़ाया था, मुझे doubt आ रहा है, so immediately Shonit, what he will do, he will take a screenshot, he will take a photo and he will immediately post it in this WhatsApp group. Okay, Shonit? And you will tag me. He will tag Yes. me. At Pritesh sir, please tell me, am I correct or did we perform this reaction in correct manner? And suppose मैंने message वो read नहीं किया, तब तक suppose Srushti has read that message. Akshay has read that message. Rishita ने message read कर लिया. So क्या करेंगे? Srushti, Rishita, Akshay, everyone will start replying him. कि नहीं, don't worry, Shonit, this is correct. And ये reason है. Don't worry, wait, I'll solve it on a piece of paper and I'll post the image for you. You can refer this. Understood, students? So that is how you will improve. You have to help your friends also. And doubts immediately post होना जरूरी है. अगर आपने सोचा कि doubt in the lecture, no, it is completely gone then. Confirm. ठीक है? हाँ, ऐसा अगर हुआ कि आपने मुझे डाउट भेजा ग्रुप पे एंड डाउट अगर if I'm not able to make it, if I'm not able to make you understand on WhatsApp group, I'll let you know. Don't worry, let us discuss this in the lecture and remind me about this. Then it is perfectly fine. Okay, students? Chalo. Yes, we have kept Srushti waiting for. Srushti, start karte hain. Plus Mg, then on arrow we'll write dry ether. Okay, very good. Dry ether. Okay, next. We'll write Mg, then Cl. Okay, where should I write Mg now? Second CH. Okay, between CH and Cl, correct? Between CH and Cl. Now tell me, what is the name, what is the common name of this reactant, Srushti? Common name of this reactant. Common name. For common name,
this carbon which is attached to Cl? Common name N. has three. No, N will not come. N will not come. First, tell me what is the nature of this carbon in the yellow box? The carbon which is attached to Cl. What is the nature of that carbon? Second. Primary, secondary. Secondary is right answer, Srushti. If it is secondary, I will have to check. Is it second also? Yes, it's second also. Very good. So now tell me what will be prefix which I'll be using, Srushti. Sec. Very good answer. Sec. Oh, sec Magnesium propyl. Sec propyl. And then what should I write, Srushti? Chloro. Sec propyl chloro. Magnesium. Over here, what should I write? Product. Over here. Over here. Over here. Chloride. Chloride is right answer. Very good. So chloro in IUPAC naming students, we're right now doing common naming IUPAC. तो मैंने ही आपको दे दिया. So I'm not going to repeat that. Sec propyl chloride. Now tell me the common name of the product, Srushti. It is very simple. You just have to insert one word. Sec propyl magnesium chloride. Very good. Sec propyl magnesium chloride. Do I have to write this, students? वापस लिखूं ये आपको समझ गया है? Should I write this again? Sec propyl magnesium chloride is the common name of the product. Next thing. Chal, I'll continue with the same product. Okay. What should I add now, Srushti? H-OH. This is water. This is my way of writing water. Okay. I'll write dry ether again. Dry ether लिख दिया मैंने. Chalo, let me go to the product now, students. Yes, Srushti, tell me. First tell me which all things I have to eliminate. MgCl is to be eliminated. Okay, and from the water part, from the water molecule, which OH. OH? Very good, very good. So by arrow, I'll show this H is going to come to this CH. Yes. So I'll have CH3, CH, CH3. I'll have green H over here. Then ये डाल दिया मैंने और ये डाल दिया OH, and then I'll have Mg, and then I'll have Cl. Clear? Yes. Yes, students, done. किसका right है? Please raise your hand. How many of you got this correct? Raise your hand. Name of alkane is? Name of alkane is? Srushti, tell me. Name of the product. Which alkane is this? Propane. Propane is right answer. Propane is right answer. All right? Chalo. हाँ, very good, very good, very good, Akshay. चलो, I'll go to the last reactant now, students. Last reactant में क्या नाम है बताओ? Last reactant नाम क्या था? 2-iodo 2-methyl butane. 2-iodo butane. Correct. So this is my reactant. Check करो एक बार. This is my reactant. All of you got this? 2-iodo 2-methyl butane. 2-iodo 2-methyl butane. Common name बता रहा हूँ. Common name now. मैं क्या करता हूँ? I identify the nature of this carbon to which iodo group is attached. So nature of this carbon is tertiary. शाबाश आयुष, क्या बात है? Very good. Dash dash. Pentyl iodide. Pentyl iodide. Super. Tert pentyl iodide is correct answer. Tert pentyl iodide. Very well done, Ayush. Tert pentyl iodide is correct answer. Plus, I'll add magnesium. थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि ये सेशन खत्म होने से पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट दे दूं स्क्रीन पे. ड्राई ईथर. ओके, देन आई प्रोसीड अहेड. आई जस्ट हैव टू ऐड बिटवीन C and I, और कुछ भी नहीं करना है. अगर मुझे आदि पूर्व पूछता है कि सर ये ऐसे लिख दूं क्या, आपको कोई प्रॉब्लम इससे? आपको इससे कोई प्रॉब्लम? No. ये देखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. मुझे कोई प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट तरीका है लिखने का. ओके, ये देखो जस्ट आपको समझाने के लिए.
You can write instead of CH2 CH3. You can condense only those sections which are in straight line. अक्षय को मन किया, अक्षय ने बोला कि तो ऐसी बात है, आदि को आपने अलाउ किया तो मुझे भी अलाउ कर दो, ये पूरा ही कंडेंस कर देता हूँ, ये पूरा ही कंडेंस करके मैं लिख देता हूँ C5H11I। चलेगा क्या आपको? चलेगा No, क्या? sir. Because this will not justify the branching, students. Okay, this won't justify the branching. Okay, then what I'll do is simple naming, by the way, tert pentyl magnesium iodide, tert pentyl magnesium iodide, tert pentyl magnesium iodide, ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में क्या आएगा? आदि Grignard's reagent. Grignard's reagent, क्या बात? So you'll write H and OH, and then elimination, elimination, elimination. Eliminate this, put dry ether, and I have my product. I have my product. ये देख लो. अब समझ में आया मैंने बनाया, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था. I was very sure कि CH2 CH3 नीचे तक ले नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको कंडेंस कर दिया. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में सारा कुछ बनाओगे, so no problem with that. Plus I should write, ये याद रहा अपन ने क्या कोड बनाया था इसका, वो कोड आप इस्तेमाल कर लो यहाँ पे. And that's it. MGI. चलो खेल खत्म. ठीक है? Okay students, is this clear? Sir, reactant name क्या है? अरे product का क्या है? प्रोडक्ट का नेम क्या आएगा? तू ट्राई कर, मुझे बता प्रोडक्ट का नेम क्या आएगा. Who will tell me name of product? Pentane. Pentane and common name is N-pentane. Name is N-pentane, IUPAC is pentane. दोनों नाम wrong है. शाबाश, well done अक्षय. दोनों नाम wrong है. चल 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 ट्राई कर, स्टेप्स फॉलो करो. ऐसे शॉर्टकट मारेगा तो रॉन्ग चले जाएगा. अक्षय इतना सिंसियर स्टूडेंट है तू. Sir, tert pentane. Tert pentane is very wrong answer. टर्ट और सेक कब यूज करना है? जब Cl, Br, I ये सब घूमते रहेंगे तब. ऋषिका टेल मी द आंसर. Sir, isopentane. Isopentane is correct answer. Isopentane is correct answer. So therefore important thing is you identify the longest continuous carbon chain, है ना. अगर जिसने ये पता लगा लिया कि this is longest continuous carbon chain, yeah, this is longest continuous carbon chain, उसको ही आंसर आएगा. So 2-methyl butane is IUPAC. Isopentane is common name. Okay students, all right, ठीक है. चलो, now homework for you would be, आज हमने जितने भी reactions किए, all those reactions 3 times, all those reactions 3 times, 3 times, all those reactions proper colorful pattern में. ठीक है, colorful pattern में. That's it from my side students. Thank you very much. Enjoy your afternoon. Sir, shape use करके चलेगा? Color pencil या pen नहीं है तो? नहीं, कलर पेंसिल या पेन लेकर आ नीचे से जाके. शेप नहीं यूज करना है, खिचड़ी नहीं बनाना है वहां पे. ठीक है, चलो बाय बाय. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.